Is it done? Done? Write down properties. Properties. Variance of x minus m है ना, माइनस m था रे वो. Write down properties. क्या करता हूँ? So in properties you have first one. Expectation of x is equal to variance of x is equal to m. First one. Second MGF. MGF of x is mxt. नहीं होता m ही था, माइनस m नहीं था. बस लिख लो, इसके कोई क्वेश्चन नहीं है आज. Just write it down. E raised to m. Equals to Over here only e raised to t minus 1. E raised to m, e raised to t minus 1. 3. 3. If x1 follows Poisson m1 and comma x2 follows Poisson m2 and x1 and x2 are independent. If x1 and x2 are independent, then x1 plus x2 follows Poisson. तो बताओ. Do you remember binomial additive property? Binomial additive property याद है क्या? When x follows binomial n1 comma p, y follows binomial n2 comma p, so x plus y was following n1 plus n2 comma p. Do you remember this? हाँ. Have you written this too? जिन्होंने लिखा इसको याद करो, ये क्लासरूम में याद करवा दूंगी या फिर ऐसे भी. Now see third one. x1 follows Poisson m1, x2 follows Poisson m2, and x1 and x2 are independent. So always remember, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये independence बहुत important है. Okay? Now tell me, just try to guess. x1 plus x2 Poisson क्या होगा? हाँ? तुम लोग देखो दोनों का पैरामीटर अलग-अलग है. और x1 plus x2 क्या हो जाएगा? m1 plus. Do you remember? Definitely, you will remember. Very easy. x1 follows Poisson m1 and x2 follows Poisson m2. Then its addition follows addition of their parameters. मैं यहाँ पर 10 डाल देती. x1 x2 up to x10. What will be its parameter? m1 plus m2 up to m10. But whenever the variables x1 up to x10 is going to be independent. Got it, everybody? One more property. Fourth है. हाँ, ये very important. x1 and क्या हुआ है? x1 follows Poisson m1, x2 follows Poisson मुझे देखना नहीं चाहिए, मैं कैसे पढ़ा था. and if ये पे जाओ. x1 and x2 are वीडियो कॉल है, independent, you will write full na, is independent, then वीडियो में निकाल वीडियो कॉल. x1 given x1 plus x2 किसको देख रहा है? equal to देख रहा है कोई? x1 plus x2 equal to and will follow. कौन सा वाला चल रहा है? क्या? Pay attention. See now that there अभी ये क्या हो गया? यहाँ पर इतना तक सेम है लेकिन ये चेंज हो रहा है, right? Here over here addition was addition of the parameter. Now see here x1 follows Poisson m1, x2 follows Poisson m2, and x1 x2 are independent. Now
x1 ये क्या है गिवन, x1 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू n। अभी x1 प्लस x2 कुछ वैल्यू होगा राइट, सम वैल्यू इट माइट बी। व्हाट इज दिस वैल्यू, ओवर हियर इट इज गिवन टू एज n। ये n जो भी है ऐसे आप रखो, इट विल फॉलो बाइनोमियल। इसको तुमको याद करना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंप्लीटली। इट विल फॉलो बाइनोमियल n m1 अपॉन m1 प्लस m2। सो कैसे याद रखोगे, x1 गिवन x1 प्लस x2 विल फॉलो बाइनोमियल। बाइनोमियल का n याद है सबको, बाइनोमियल में n होता है, वो n आएगा पहले, ठीक है, और उसका p होता है राइट, पैरामीटर बाइनोमियल का। सो दिस इज नथिंग बट योर p, बट हाउ योर p इज लुकिंग लाइक m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको कैसे याद रखोगे, x1 गिवन x1 प्लस x2, तो x1 का m1 और x1 प्लस x2 का m1 प्लस m2, फाइन। सो x1 गिवन x1 प्लस x2 विल फॉलो व्हाट, बाइनोमियल। पैरामीटर क्या देगा, p का वैल्यू क्या देगा, याद नहीं करो, यहाँ से कैसे, यहाँ से हमको निकालना है m का वैल्यू, p का वैल्यू क्या रहेगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स इट, गॉट इट एवरीबॉडी। बस इतना ही प्रॉपर्टीज है। नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस वी हैव क्वेश्चंस, राइट। लेकिन इधर लग नहीं पाएगा, छोटा बना। Done everybody? Okay. I'll drop this. तुम लोग मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा, ठीक है। So if two Poisson random variable are independent, then their addition is x1 if x1 follows Poisson and m1 and x2 follows Poisson and 2, then x1 plus x2 is m1 plus m2। x1 given x1 plus x2 is what, binomial। binomial का पता है n होता है, so n कॉमा m1 अपॉन m1 plus m2। अगर p याद नहीं हो रहा तो कैसे याद रखोगे, इसी से याद कर लेना, यहीं पर, ठीक है। ओके फाइन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, है कौन, वो कौन है, क्विक्स पे देखेगा, वापस से जाके लेक्चर है ना। now you tell me क्या read the question क्या करना tell me है, what all things are given to you and what should I write, क्या कल मैं क्या करने वाला, चल छोड़, कल ही बताऊंगा क्या करने वाला। पे इक्वल्स ये ऐसा रिश्ता है और ये दूसरा है, ऐसे मिला ये वाला हो गया, ये सिर्फ what ये होगा, n दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इनका वैल्यू, कैसे आइडेंटिफाई किया, p, और एक्सीडेंट है तो क्या आइडेंटिफाई किया, रेयर इवेंट। सो रेयर इवेंट क्वेश्चन में पता चल जाता है, इट्स रेयर इवेंट। सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ हाईवे ड्यूरिंग अ मंथ फॉलोज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी मैं बता दूँ, with v 5। so what is given to us, m is given to you। अगर समझो इसके ऊपर लिखा रहता पैरामीटर 5 है तो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मीन दिया हुआ है, 5 is 5। find the probability that a certain number of accidents on the highway is less than 3 and so on। so what you have to find, probability x less than 3। what is your x, लिखो क्या है, yeah, number of accidents taking place on the highway। so what is your event of interest, क्या है इसमें, एक्सीडेंट हो रहे हैं वो, करेक्ट। अब कितने और उसको क्वेश्चंस दिए, X नहीं डाला, दैट इज योर कैपिटल P नहीं डाला, राइट। नाउ यू टू राइट लेट कैपिटल नहीं आती x है, denote जब तक